Good morning, students. Now, today we are going to discuss two terms that are morality and law. The one term is morality and the second term is law. What is the main difference between these two terms? That is, law जो है that refers to the set of rules and regulations enforced by the state to regulate the human behavior in society, whereas morality refers to the ethical code of conduct for a human being. Okay, so we can say that morality stands are the basis for the law, while morality is ensured by living according to the law. Okay, are you getting it? So again, repeat it. Morality is what? These are the rules of right conduct concerning matters of greater importance. Violations of such can bring disturbance to individual conscience and social sanctions. Law is what? Rules which are enforced by society. Violations may bring a loss of or reduction in freedom and possessions. Okay, morality जो है वो वायलेट करता है जो हमारे पर्सनल बिहेवियर पर डिपेंड करता है. लॉ जो है दैट आर एनफोर्स्ड बाय सोसाइटी. Okay, a fundamental principle of morality, people should try in so far as possible to continue to progress in the moral life. Moral rights may be overlap on human rights, professional rights, contractual rights, and employee rights. Human rights possessed by virtue of being people or moral agents. All engineers are entitled to all the rights and freedoms set forth in human rights without distinction of any kind, such as color, age, gender, race, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property or other status. This is the relationship between law and morality. आप देख रहे होंगे both are overlapping each other. यानी कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा impact डालते हैं. Okay, they are मतलब we can say that they are very much related to each other. Okay, और बहुत ancient time से they have been used interchangeably. However, we can find differences between law and morality with concern to several prime factors. Okay, so we can say law is essentially a set of rules and principles created and enforced by the state, whereas morals are a set of beliefs, values, and principles and behavior standards which are enforced and created by society. लॉ जो है एक स्टेट वाइज बने हुए हैं, एक रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, जिसको वायलेट करोगे तो दैट कैन इम्पैक्ट योर मतलब आपको मतलब हर तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है. ठीक है, और मॉरलिटी अगर आप वायलेट करोगे उसके भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, आपको किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, मतलब वो चीजें दैट कम्स इनटू मॉरलिटी. ओके, सो डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों के बीच में. लॉ जो है देयर सैंक्शंस आर इनवेरिएबली इम्पोज्ड फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन. मॉरलिटी जो है देयर इज नो ऑफिशियल सैंक्शन फॉर इमोरल बिहेवियर, ऑल्दो सोसाइटी ऑफन क्रिएट्स इट्स ओन फॉर्म ऑफ सेंसर्स. इसमें कोई लीगली जो है ऑब्लिगेशन नहीं है मॉरलिटी में कि भाई हमें ये काम करना चाहिए. आपको सड़क पे कचरा दिख रहा है तो आप उठाकर फेंको, दैट इज इट कम्स इनटू योर मतलब हम कहते हैं ना एथिक्स, है ना. Law is deliberately changed by parliament and all the other or the courts. Morality cannot be deliberately changed, rather it evolves slowly. Legal principles needs to incorporate a degree of certainty. Morality is invariably much more flexible and variable. Okay, so difference अगर हमसे पूछा जाए कि क्या difference है दोनों के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि law जो है it is the system of rules which a particular country or community recognize to regulate the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalty. Morality जो है it is the set of ethical principles that define what is morally right and morally wrong. And second thing, enforcement की अगर हम बात करते हैं तो लॉ जो है इट इज एनफोर्स्ड बाय द रूलिंग बॉडीज ऑफ अ कंट्री, स्टेट और अ सोसाइटी. और मॉरलिटी में कोई एनफोर्समेंट नहीं है, नो सिग्निफिकेंट बॉडी टू एनफोर्स मॉरल कोड्स, हाउएवर दे आर फॉलोड बाय दोज दैट आर टॉट बाय द रिलीजियस टीचिंग्स एंड सोशल एथिक्स. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लॉ क्रिएट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. मॉरलिटी, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन मॉरलिटी. इमरजेंस की बात करें तो मॉरलिटी इन्फ्लुएंस द इमरजेंस ऑफ लॉ इन कंट्री और कम्युनिटी एज लॉ वाज डेवलप्ड आफ्टर मॉरलिटी. मॉरलिटी वाज इमर्स्ड बिफोर आइडियल सेट ऑफ लॉज. पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर डायरेक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु वायलेट द लॉ. लॉ को अगर कोई वायलेट करेगा तो डायरेक्ट पनिशमेंट आपको मिलेगा, बट मॉरलिटी के लिए देयर नो सच एनफोर्स्ड डायरेक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु डू इमोरल एक्ट्स. अब इफेक्ट क्या है? लॉ इज डायरेक्ट, इट इज ओबेड. टू फॉलो लॉज ऑफ लैंड इज ऑब्लिगेशन एंड नॉट चॉइस.
ओके, ब्रेकिंग लॉ इज नॉट ऑलवेज और नेसेसरली इमोरल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी फैमिली की हेल्प करी, ठीक है, अगेंस्ट मतलब ज्यूस फैमिली की हेल्प की टू हाइड फ्रॉम द नाजीज, वाज अगेंस्ट जर्मन लॉ, ठीक है, बट इट वुड हैव बीन अ मॉरली एडमायरेबल थिंग टू हैव डन। एन एक्शन कैन बी इलीगल बट मॉरली राइट। कोई चीज ऐसी हो सकती है कि इलीगल हो बट मॉरली आप कह सकते हो कि वो राइट है। आपने अगेंस्ट लॉ आपने ज्यूस फैमिली की हेल्प की, आपने उनको छुड़ा के दूसरी कंट्री से अपनी खुद की कंट्री में पहुंचाया, बट इट वॉज इलीगल बट इट वॉज मॉरली राइट। Morality जो है, it can be followed or not according to the person's choice. The legality of an action does not guarantee that it is morally right. Okay, जरूरी नहीं है कोई चीज लीगली सही हो और मॉरली सही ना हो, और कोई मॉरली सही हो लीगली सही नहीं हो, ठीक है। और सिमिलरिटी बहुत है दोनों के बीच में। मॉरलिटी जो है वो लॉ को इफेक्ट डालती है, प्रोवाइडिंग एथिकल रीजंस एज टू व्हाई द इमोरल एक्शंस आर कंसिडर्ड इलीगल बाय द लॉ। Morality stands as the fundamental basis for the idea set of laws in a country. Moreover, morality aims at uplifting the moral standards of the people, while the core aim of the law is also the same thing. दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और दोनों में काफी डिफरेंसेस भी है। जैसा कि हमने देखा कि लॉ को अगर वायलेट करोगे तो देयर आर सर्टेन पनिशमेंट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि हर चीज के लिए, हर क्राइम के लिए आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। बट मॉरलिटी में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, ये पर्सन की चॉइस पर है। बट हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों रिलेटेड है, और जरूरी नहीं है कि कोई काम इलीगल हो तो मॉरली सही हो, और मॉरली सही है तो इलीगल ना हो, ठीक है। Now the second thing is how are moral standards formed? किस तरीके से moral standards form हुए? हमने कहा ना कि चाइल्डहुड से हमारे अंदर इंस्टिल किए हुए होते हैं, कि आपको हमें बताया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए। हमें जैसे बचपन में सिखाया गया है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया यानी कि मोरली वो आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो morals are formed out of a person's values. Values are the foundation of a person's ability to judge between right and wrong. Morals build on this to form specific context-driven rules that govern a person's behavior. They are formed from a person's life experience and are subject to opinion. A moral standard refers to the norms which we have about the type of actions which we believe to be morally acceptable and morally unacceptable. Specifically, moral standards deal with matters which can either seriously harm or seriously benefit human beings. Okay, the validity of moral standards come from the line of reasoning that was taken to back or support them, and thus are not able to be formed or changed by particular bodies or authority. अब हमें क्या जरूरत पड़ती है? Why we need values and morals? अगर हमें कुछ बताया ही नहीं जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम एक रैंडम मूवमेंट होगा हमारा, हमें कुछ पता है, हम जैसे मतलब कहा जाता है ना कि आप कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी? First thing, they could guide your life minute by minute towards noble goals rather than your life being controlled by self-serving motives, customs, accidental occurrences, bad habits, impulses or emotions. You have to know where you are going before you can get there. आपको पता होना चाहिए आप कर रहे हो तो कोई चीज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे हम कहते हैं ना मुझे वहां जाना है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो अभी तो भटक जाओगे, आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ से है। Values and morals can not only guide but inspire and motivate you, giving you energy and a zest for living and for doing something meaningful. Sensitivity to a failure to live up to your basic values may lead to unproductive guilt or to constructive self-satisfaction, which motivates you to improve. High values and success meeting those goals are necessary for high self-esteem. Professed but unused values are worthless or worth so for any goodness and rationalizations for not changing. We must be honest with ourselves, recognizing the difference between pretended values and operational values. Of course, no one lives up to all their ideals, but values that only make us look or feel good and do not help us act more morally must be recognized as self-serving hypocrisy. Okay. तो क्यों ये moral values, morality की हमें जरूरत पड़ रही है? ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना है, हम जो चीज कर रहे हैं उसका impact क्या है. Okay. How moral problems arise? A product goes through various engineering stages like design, manufacture, testing, sales, and service. These stages are carried out or supported by specialized engineers. Various activities are grouped or interrelated with each other. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो बहुत सारी स्टेजेस को पार करके फिर आगे कस्टमर तक तो एंड तक पहुंचता है, ठीक है। पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेस्टिंग होती है, सेल्स होती है, सर्विस होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और intentionally the product may be unsafe.
Not useful, also the product may be intentionally designed for early obsolescence. When such a product is circulated in market, many people may be affected. Such problems may arise because of temptation of bribes and any form of corruption. ठीक है, अगर आपको कुछ पता ही नहीं कैसे भी फॉर्म में आपने उसको तैयार कर दिया तो आगे जाके वो पीपल के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो अब जैसे इंजीनियरिंग एथिक्स के एग्जांपल्स दिए हैं मैं. An inspector declares an instrument not to be used from safety point of view, but his superior may view this as minor infraction of safety regulation and may permit the use of equipment. The inspector may be objected and was threatened with disciplinary action. भाई कोई चीज ऐसे बता दी कि इसको यूज नहीं लेना है, पर दूसरा सुपरवाइजर वो देखता है क्या इतना सा तो डिफेक्ट ले सकते हैं यूज में, तो जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके उस इतना छोटा सा डिफेक्ट उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. An electronic company engaged in manufacturing of a popular and new item. The product is not yet ready, but its advertisement is very impressive. The prospective customers get attracted and rush to the dealer. When they don't get the product, they believe that it was available off the shelf and the product is drawn away from completing lines. इसी तरीके से a chemical plant dumping waste in landfill hazardous substances found their way into the underground water table. The plant's engineer is well aware by the situation but did not change the disposal method because the competitor is following the same cheap method. No law is prohibiting by doing so. Plant supervisors view is that it is the responsibility of local government to identify the problem and penalize the defaulters. ये आपने पहले भी मतलब देखा होगा कि किस तरीके से डंपिंग कर दी जाती है वेस्ट की, कितनी कम फैक्ट्रीज वगैरह से जो डंपिंग की जाती है वेस्ट की, सब एक दूसरे से चीप मेथड सर्च कर रहे हैं कि हमें जो सस्ता पड़ जाए डिस्पोजल मेथड, बाकी तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो देखती रहेगी आगे. ठीक है, so all these examples show how ethical problems arise most often due to differences in judgment and expectations. The engineer may face different contrary opinions from within the organization from various social and local authorities.